Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing about prepositions. So let's start. What are prepositions? Prepositions are basically the keywords that indicate the start of the prepositional phrase. A prepositional phrase begins with the first preposition in the sentence and ends with the object or the noun phrase. Example: She sat on red carpet while reading. The italicized portion जो है ना on the red carpet, ये पूरा का पूरा prepositional phrase है, जो कि start हो रहा है preposition on से. Generally, prepositional phrase acts as adverbs or adjectives in that they modify either verbs or adverbs or adjectives. पहला आपने देखना है one point in time. On, at या in जो है ना वो किसी moment को describe करने के लिए use करते हैं जब हम time की बात कर रहे हो. On is used with days. I will see you on Monday. ठीक है, this week begins on Sunday. And at is basically used with noon, night, midnight, and with the time of the day. The plane leaves at noon. Your movie starts at 6. In is basically used with other parts of the day, with months, with years, and with seasons. He likes to read in the afternoon. Yeah, the days are long. In August, your book was published in 1999, and the flowers will bloom in spring. फिर हमने बात करनी है थोड़ी सी एक्सटेंडेड टाइम के बारे में. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द एक्सटेंडेड टाइम यूजुअली जो प्रपोजिशंस यूज होती हैं, इट इंक्लूड्स सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, ड्यूरिंग, विद, इन. शी हैज बीन गॉन सिंस yesterday. She left and has not returned. तो ये एक एक्सटेंडेड टाइम की इंडिकेशन है. इसी तरह आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 weeks. ठीक है, अब चूंकि आपने वहां पे दो हफ्ते गुजारे हैं तो अगेन ये एक्सटेंडेड टाइम की इंडिकेशन है. द मूवी शो फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, अगेन ये एक्सटेंडेड टाइम की इंडिकेशन है. द डेकोरेशंस were up from spring until fall, अगेन ये एक सीजन से दूसरे सीजन तक की इंडिकेशन है. I watch TV during evening. For some period of time in evening, again extended type की example है. And we must finish the project within a year. ठीक है, no longer than a year. Again ये एक extended time ही की example है. Now we're going to talk about the preposition of phrase. To express the notion of place, जो prepositions use होती हैं वो in होती है. To talk about an object being contained, यहाँ inside use होती है. To refer more specifically where the object is contained. और यहाँ पर on use होती है to talk about the surface. यहाँ पर at to look about general vicinity. एग्जाम्पल देखें कि there is a wasp in a house. ठीक है, तो चूंकि घर के अंदर है तो इस वजह से in use हुआ. इसी तरह go look inside the refrigerator. Inside is basically used as a specific place. ठीक है, तो house तो बड़ा है तो इसके लिए in, लेकिन मजीद specific कर दिया तो इस वजह से inside use किया. I left your keys on table. किसी चीज के ऊपर रखना, surface के ऊपर, इसके लिए on. She was waiting at the corner. ठीक है, तो ये location है तो उसके लिए at use हुआ. This is all for today. Thank you so much.